Hey, welcome everyone to the another video. This side Sagar Chauhan and welcome to the channel Unique Editing. Today I am going to tell you how to create a logo with Android with the free mobile app. बेसिकली लोगो क्रिएट करने के लिए हम लोगो मेकर का यूज करेंगे. लोगो मेकर में आप आपके नेम, चैनल नेम, बिजनेस नेम, स्पेशली आप आपके डिफरेंट चैनल वाइज सेपरेट लोगो भी क्रिएट कर सकते हो, लाइक ब्लॉगिंग चैनल, कुकिंग चैनल, एजुकेशनल, टेक. आप डिफरेंट चैनल वाइज सेपरेट लोगो भी क्रिएट कर सकते हो. You can download Logo Maker from Play Store with the free. So let's start the video and go to the screen. After click on the Logo Maker, you will see this first interface. लोगो मेकर में आप बिजनेस कार्ड, इनविटेशंस, फ्लेयर्स, इनवॉइसेस, थंबनेल्स भी क्रिएट कर सकते हो. फर्स्टली आपको कुछ डिफ़ॉल्ट लोगो भी मिल जाएंगे लोगो मेकर में. आप आपके चैनल वाइज जो लोगो सिलेक्ट करना है वो कर लीजिए. कार्ड, वाटर, मेडिकल, ट्रैवल, कुकिंग, रिलीजियन, फैशन, मेकअप, फोटोग्राफी, बेसिक, लेटर, बीच. आप आपके चैनल वाइज या आपके नेम वाइज, बिजनेस वाइज आप सर्च भी कर सकते हैं आपको जो लोगो चाहिए हो. मैं आपको एग्जांपल के लिए एक प्रैक्टिकल लोगो क्रिएट करके दिखाता हूँ. आपको जो लोगो अच्छा लगता है उस पर क्लिक कर दीजिए. नेम चेंज करने के लिए क्लिक ऑन द नेम एंड क्लिक ऑन द चेंज टेक्स्ट. यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट ऐड करना है उसे राइट कर दीजिए. देन क्लिक ऑन द राइट एरो. अगर आपको उसका कलर या फॉन्ट चेंज करना है तो क्लिक ऑन द एडिट. यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे फॉन्ट चेंज करने के लिए. साइज चेंज करनी है तो साइज पर क्लिक कर दीजिए. स्टाइल, कलर्स चेंज कर सकते हो आप. शेप, शैडो, ओबेसिटी. अगर आपको ये ब्लैक बैकग्राउंड चेंज करना है तो जस्ट क्लिक ऑन द बैकग्राउंड. यहाँ से आप आपको जो बैकग्राउंड अच्छा लगता है वो रख सकते हो. लोगो में करके ही आप कुछ डिफॉल्ट बैकग्राउंड यहाँ पर रख सकते हो. कलर्स भी चेंज कर सकते हो, ग्रेडियंट. Then click on the done option. After completed it, click on the save option. Then click on the save in gallery. अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ नॉट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.